Okay, Mr. Rahul Bharadwaj, welcome to MargDarshan. Thank First you, of sir. all, tell me something about yourself. Sir, I am Rahul Bharadwaj. I am from Ludhiana, Punjab. I have completed my graduation from Guru Nanak Dev Engineering College in Electrical from Ludhiana. The activities that I like to do in my free time is cooking and playing volleyball. My father is currently working as junior engineer in Punjab State Transmission Corporation Limited, and my mother is a homemaker. Okay, right. Okay, what are your hobbies? Sir, I love cooking and playing volleyball. What kind of food you will like to cook? Sir, I can cook dal and various sabjis also, and I can cook some dishes like rajma, paneer, etc. Okay. What is your favorite dish? Sir, I like paneer burji. Okay, right. And what are your strengths and weaknesses? Sir, my strength is I am punctual, hardworking, and also I have a team leader like qualities. And the weakness that I have is that uh, I do not take care of my diet, but now I have including some fruits and vegetables and also juices in my diet so that I can stay more healthy and physically fit. Okay, okay, right. What will happen if the primary of a transformer is connected to a DC supply? So it will get burnt. Okay. Why it will get burned? Because if we apply DC to the primary, then there will be no mutual flux, and the winding of the primary will have more heat dissipation and it will get burnt. Okay. Suppose we have to reduce hysteresis loss of a transformer. Yes, sir. What changes we will do in the core of a transformer? Sir, to reduce the history loss, we can reduce Hysteresis. the yes, sir. Sir, if V by F ratio is kept constant, then we can reduce the voltage for reducing the hysteresis loss. How we can kept the V by F ratio constant? Sir, by uh, with the help of the sir, by changing the number of turns, By changing number of turns, how it will uh, relate to V by F ratio? sir, because if the V by F ratio is constant, then the magnetic field is constant. Okay. So if we kept the voltage per turn to be constant with the help of the tap changer, then we can maintain the V by F ratio It constant. will impact only voltage. And how we will keep frequency constant? Sorry, sir, I have no idea about frequency. Have you heard the name ferrite core? Yes, sir. What is the meaning of that? Sir, ferrite cores are high frequency, ferrite cores are the cores which are used to reduce losses and are made of are used at high frequencies. Okay. How to reduce eddy current loss in a transformer? Sir, with the help of the thin lamination of a varnish of about 0.4 to 0.5 mm, we can. Yes, sir. Or thin lamination of insulation? Sir, insulations. Sir, varnish is also insulation. Varnish is the coating. Okay. Okay. What is induction motor? Sir, induction motor is a uh, motor in which we give supply in the stator, and with the help of that rotating magnetic field is produced, and when that rotating magnetic field cut the rotor conductors, as the rotors are short circuited, so a current will flow in the rotor,
and due to that current, the rotor will start to rotate and will try to catch the magnetic field of the stator but it is not able to catch. So there is a slip also, which is the difference between the NS and synchronous speed and the rotor speed. Why induction motor is called as rotating transformer? Sir, because like the induction motor is similar to the transformer with short-circuited secondary. Okay. Suppose if the induction motor is slip ring type, Yes, sir. in that also the rotor side are short circuited. No, sir. Okay. Slip ring are in a three-phase induction motor are connected in star or delta. Sir, star. Why it will connect in star, not in delta? Sir, because in star we can add external resistance for increasing the starting torque and for decreasing the starting current. Okay, good. Suppose we have to use a capacitor bank in a substation. Yes, sir. It is preferable that the capacitor banks are connected in star or in delta. Sir, in delta. Why not in star? Sir, because the effective capacitance increases in delta as compared to star. Okay, right. And what are the reactive power compensation equipments used at a substation? Sir, the one is shunt reactor, Okay, other is series capacitor, shunt okay. and shunt capacitor. What is the difference between series capacitor and shunt capacitor? Sir, series capacitor is connected in series with the equipment. Shunt capacitor is connected in parallel. The Which are series the name capacitor. of the capacitor? What is the basic difference of applications of these two type of capacitor? Sir, the series capacitors are used for improving the power factor. Series capacitor are used in improving power factor. No, sir, series capacitors are used for voltage compensation, and shunt capacitors are used for improving the power factor. Okay. How series capacitor are used to improve the for voltage compensation? Sir, as in series capacitance, the capacitance is less, so the capacitive reactance will also be less. Okay, right. Suppose a line contains a very less amount of resistance and a reactance. Let us assume that the reactance value is X. Yes, sir. And by using the series capacitor uh, of that, the capacitance value is also X. What, sir? That the capacitor exactly compensates the reactance of the line. In that case, the power transmission from primary to secondary is infinite. Why we will not prefer that condition? Because if we compensate more the line reactance, the more the power we get at secondary side. Why Yes, we sir. will not prefer that method? What is the problem in that method? Sir, can I get some time to think? Okay, you can take your time. You have Sir, understand my question? yes, sir. You have said that if we have provide capacitor for the reactive power मैं फिर से compensation. रिपीट कर देता हूँ एक Yes, लाइन लाइन में रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है लाइन का कोई yes, रिएक्टेंस ठीक है अब हम अगर सीरीज कैपेसिटेंस यूज करते हैं इस केस में तो क्या होगा कि जितना ज्यादा सीरीज कैपेसिटेंस लाइन की रिएक्टेंस को कंपनसेट करेगा उतना ही ज्यादा हमारी पावर प्राइम जो हमारे सोर्स से लोड में ज्यादा पावर ट्रांसफर होगी तो yes, एक sir. लिमिट के बाद हम ऐसा नहीं करते हैं ऐसा क्यों करते हैं अगर हम एग्जैक्टली कंपनसेट क्यों नहीं कर देते पावर जितनी मिलेगी उतनी हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच जाएगी पावर तो प्रॉब्लम क्या है इस मेथड Sir, में sir, if can I am allowed to guess? ओके यू कैन गेस Sir, I think that the transient stability limit will get violated or something of the line. Okay, this is more or less the correct answer, but not exact answer. Suppose
द करेक्ट आंसर इज, अगर हम एग्जैक्टली कंपनसेट करेंगे तो एक रेजोनेंस फिनोमेना हो गया। लाइन की यस रिएक्टेंस सर। को कैपेसिटेंस से कंपनसेट कर रहे हैं, ये तो यस रेजोनेंस सर। फिनोमेना हो गया। यस सर। इसको ये रेजोनेंस फिनोमेना करना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली कंपनसेट कभी नहीं करते हैं। एक यस। लिमिट तक हम लाइन रिएक्टेंस चाहते हैं कि लाइन में हो, क्योंकि और वो रेजोनेंस का जो फिनोमेना है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसको फेरो रेजोनेंस बोलते हैं, और ओके सब सर। सिंक्रोनस रेजोनेंस के दो नाम है, फेरो रेजोनेंस एंड सब सिंक्रोनस रेजोनेंस। ठीक है। यस सर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर? बोथ आर सेम और डिफरेंट? सर बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। यस सर। देन इन द बुक्स देयर आर टू टाइप ऑफ अरेस्टर, वन इज लाइटनिंग अरेस्टर एंड वन इज सर्ज अरेस्टर। तो दो चीजें पढ़ने की जरूरत क्या है अगर दोनों सेम ही है तो? Sir, I think that lighting arrestor is also used to protect the equipment from the lightning searching and the switching surges and surge arrestor. लाइटनिंग अरेस्टर स्विचिंग सर्जेस के लिए भी यूज होता है। Yes, sir. आपको कंफर्म है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. लाइटनिंग अरेस्टर एक्चुअली क्या है कि केवल लाइटनिंग सर्जेस के लिए है, और जो ट्रेवलिंग सर्जेस होती हैं उनके लिए सर्ज अरेस्टर होता है। दोनों Okay. अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। Okay, sir. लाइटनिंग अरेस्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स के लिए, लेकिन सर्ज अरेस्टर क्या है कि जो वोल्टेज में सर्ज होती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम सर्ज अरेस्टर यूज करते हैं। Okay, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांजिएंट वोल्टेज? Sir, that the voltage that is labeled in the line for short duration of the time due to capacitive effect. ओके, पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी कितने टाइप की होती है? So two types. दो ही टाइप की स्टेबिलिटी होती है, कौन कौन सी? So transient stability and critical stability. क्रिटिकल स्टेबिलिटी Yes, sir. और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। Yes, sir. Steady state stability. एक स्टेबिलिटी और भी होती है, उसका क्या नाम है? एक Sir, डायनेमिक critical. स्टेबिलिटी भी होती है। Yes, sir. तीन टाइप की Dynamics. होती है, मोस्टली बुक्स बुक्स में टू ही लिखी होती है। स्टेबिलिटी तीन टाइप की होती है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी। हाउ टू improve द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी? Sir, by reducing the reactance of the line. इट विल improve द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी? Sorry, sir. Steady state stability. ओके, एंड हाउ टू improve द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी? Sorry, sir. I'm not recalling at this time. Why synchronous motor is not self-starting? Sir, because synchronous motor is a doubly excited machine, Okay. and for self-starting, there must be a RMF, but in synchronous machine, there is no RMF present. Why there is no RMF in synchronous machine? Sir, in for mutual flux, linkage, the rotor is. Sorry, sir, I am not recalling. Okay. What is superconductor? The superconductor is a conductor which is a conductor which shows the property of superconductivity at a particular temperature and pressure. Okay. What is the difference between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor? The intrinsic semiconductor is a semiconductor which has atom in its pure form, and extrinsic semiconductor is a type of semiconductor which is formed by doping it with the group 13 or group 15 elements. There Okay. are two types, p type and n type. Okay.
जनरली टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक ओपन लूप होता है, क्लोज लूप होता है। यस सर। कौन सा कंट्रोल सिस्टम बेटर होता है? सर ओपन लूप। ओपन लूप क्यों बेटर होता है क्लोज लूप से? Sir, because in closed loop, every time we have to provide the feedback and we have to change the input according for getting the desired output. But but in open loop system, the speed we get the fast output and the speed of response is more as compared to closed loop system. ओके। And also the open loop system has high sensitivity. ओके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूज ऑफ आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर? Sir, because because of the better flux linkage, we can get better flux linkage with the help of the iron core. सपोज इफ द फ्लक्स linkages आर वेरी लेस, Yes, sir. हाउ इट विल इम्पैक्ट द ट्रांसफार्मर? Sir, if the flux linkage will is less, then there will be more leakage in the transformer, and there will be more leakage current in the transformer and more eddy currents also, which will reduce the efficiency of the transformer. ओके। व्हाट इज द डिजॉल्व गैस एनालिसिस इन ट्रांसफार्मर? हैव यू heard the name dissolved gas analysis? Sir, I have heard, but I have not much knowledge about it. Okay, right. What is the full form of fact device? Sir, flexible AC transmission. What is the meaning of that device in flexible? What is the meaning of that flexible? Sorry, sir, I am not recalling. Okay. Suppose we have to compensate for reactive power in its transmission line, right? Yes, There are two types of method. One is synchronous condenser and another one is capacitor bank. yes, sir. Why we will generally prefer capacitor bank in a substation, not a synchronous condenser? Sir, because in synchronous conduction, we have to make it overexcite, then we can use it. Uh, but in case of the capacitor bank, we can directly use it without making giving it any excitation. Okay. ठीक. Yeah. What is creepage distance? But sir, Creepage distance. sorry, sir, I am not recalling at this time. Okay. आपने ट्रेनिंग अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सब स्टेशन से करी, राइट? Yes, yes, सब sir. स्टेशन में एक ग्रेवल्स पड़े होते हैं। ग्रेवल्स पता But है आपको क्या होते हैं? yes, sir. उनका क्या पर्पज है? Sir, basically they are used for as a fire resistance and also for shock absorptions and to prevent to protect the area around and the equipments in the substation. ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेप पोटेंशियल? Sir, step potential is a potential at a particular point where the conductor or a body has in contact with the voltage. सपोज हमें स्टेप पोटेंशियल से अगर खुद को प्रिवेंट करना है, Yes, sir. तो क्या मेथड्स हो सकते हैं इसके? Sir, sir, by reducing the area, effective area of cross section. हाउ वी विल रिड्यूस इफेक्टिव एरिया? Sir, sir, can you explain it by giving the example? ओके। Sir, for example, a transmission line fall and a line to ground fault occurs, and a human comes in contact with that transmission line. If he had to escape from it, he have to reduce its step potential. For example, he's walking on is on 2 feet. To remove from that area, he can jump on his single feet and he can reduce the step potential and can easily escape from that. ओके, गुड।
एंड व्हाट इज टच पोटेंशियल? Sorry, sir, I am not recalling. ओके, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑयल विच इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर? Sir, try naphthalate distillate, or we can simply say paraffin oil or mineral oil. ओके। व्हाट इज द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इन ए पावर ट्रांसफार्मर? Sir, 21.1 kV per centimeter. इट इज ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर, आई थिंक, Yes, नॉट sir. ट्रांसफार्मर ऑयल। Yes, sir. Yes. Sorry, sir, I'm not recalling. ओके। नॉर्मली लार्ज रेटिंग के पावर ट्रांसफार्मर में 75 केवी होती है, केवी पर एम। Okay, sir. और अगर उससे थोड़ा सा छोटी रेटिंग का है तो 45 केवी तक होती है। ठीक है। Okay. 35 to 45 चीजें वेरी करती हैं पहले के बेसिस पे। ओके। Yes, sir. लाइटनिंग अरेस्टर में एक रेजिस्टेंस यूज होता है, रेजिस्टिव मटेरियल यूज होता है। Yes, sir. वो मटेरियल लीनियर होता है कि नॉन लीनियर होता है? Sir, non-linear होता है. नॉन लीनियर क्या होता है? Sir, because it offers low impedance path to high voltage and a high impedance to the low voltage. और अगर लीनियर मटेरियल यूज करेंगे रेजिस्टेंस के लिए तो क्या इम्पैक्ट होगा? Sir, then it will destroy the equipments around the substation. It will our equipments will not get safe from the lightning surges. ओके, राइट। हाई वेव ट्रैप इज यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन। Sir, because the transmission lines that we used in substation are used for two purposes. First, for transmission of the power, and other for the power line communication. And for line communication, the signals that we require are basically of high frequency. And the transformers and other equipments that we used in the substation, we have to protect that from high frequency. So the wave trap basically blocks the high frequency communication signals and provide a alternative path to that high frequency communication signal through a capacitive voltage transformer or coupling capacitors, so that our transformers get saved or other equipments also. वेव ट्रैप एक्ट एज विच टाइप ऑफ फिल्टर? Sir, it is basically a high pass filter. ओके, सी योर इंटरव्यू इज ओवर, आई एम गिविंग यू फीडबैक। Yes, sir. टेक्निकल नॉलेज ठीक है, कहीं कहीं पर छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जा रही हैं। बाकी जो Yes, मैंने sir. क्वेश्चंस पूछे थे मोस्टली आज थोड़े से टफर टफर साइड ही पूछे थे। Yes, sir. क्रीपेज डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे कि हम आर्किंग हॉर्न यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन Yes. में। Yes, sir. एक पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होता है, दूसरा साइड जो होता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो Yes, जो sir. दोनों हॉर्न होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं क्रीपेज डिस्टेंस। यही Okay, सेम sir. टर्म जो है वो हमारे उसमें लाइटनिंग अरेस्टर में भी यूज होता है। एक पार्ट जो है वो हमारा कंडक्टर से कनेक्ट होता है और जो अर्थ से कनेक्ट होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के केस में क्रीपेज डिस्टेंस। ओके, Okay, sir. ठीक है। और दूसरा जो मैंने लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर वो मैंने क्लियर कर ही दिया था उसी समय। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन आपका? सर बाकी हाँ, बाकी सर. मैंने वो पूछा था आपसे कि आपसे लॉसेस के बारे में पूछा था, ट्रांसमिशन लाइन के वो ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। यस सर. वो थोड़ा सा एक बार आप पढ़िए अच्छे से, ओके आयरन सर. लॉस कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके. हाई रेजिस्टिविटी का मटेरियल यूज करके हम आयरन लॉस रिड्यूस कर सकते हैं। यस सर. वी बाई एफ रेशियो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो वो वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रखने के टर्म्स में नहीं पूछ रहा है वो आपसे। ओके वो सर. आपसे ऐसे ही आंसर की उम्मीद कर रहा है कि हम मटेरियल में क्या चेंज करेंगे। एक ओके. ट्रांसफॉर्मर, एक तो होता है कि एक डिजाइन इंजीनियर के टर्म्स में सोचना, एक होता है ऑपरेशन यस. इंजीनियर के टर्म्स में सोचना। ठीक है। यस सर. बाकी एडी करंट लॉस ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे सीटीपीटी का भी ठीक है, जो बाकी का था। और आपका कोई डाउट? सर मेरा एक डाउट है कि सर ये जैसे एनएफएल की हिस्ट्री मैंने पढ़ ली है, और हाँ, उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स और बजट वगैरह में जो इस बार उनको मिला है वो सब बेसिक वगैरह सब देख लिया है, और उनके प्लान्स वगैरह, सर इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है?
कोई चांसेस नहीं है पूछने की। एक्चुअली क्या है कि एक इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप चीजों जानते होंगे, क्योंकि यस आप सर। रिसेंट पास आउट हुए हैं। आपसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट वो नहीं करते हैं। नॉर्मली एचआर क्वेश्चन अच्छे से, और टेक्निकल क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के, बस। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज पॉसिबल नहीं है कि आप आंसर कर पाए। इवन आप यस सर। 60-70% क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, इट मोर देन एनफ।